You are starting. हाँ यस अंकिता, इस समय आप क्या कर रहे हैं? Good evening. गुड इवनिंग। So from past 1 year, I have been preparing for the BPSC examination. ओके ओके ओके। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट पे किया है? Sir, I have done my graduation in agriculture, BSc agriculture. कहाँ से किया आपने? So from Birsa Agricultural University, Ranchi. ओके, फ्रॉम बिरसा रांची। तो बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बताइए आपने। Yes, sir. फ्रीडम Sir, स्ट्रगल में क्या Birsa उनका? Munda. यस यस Yes, प्रोसीड। sir. So Birsa Munda was a social reformer. Basically, he led the Ulgulan movement and he fought for the cultural as well as other rights of the tribals. ओके, ये आप बीएससी आपने एग्रीकल्चर में किया, ऑप्शनल क्या है आपका यहाँ पे? So my optional is sociology. सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है। सोशियोलॉजी आपने अच्छा एग्रीकल्चर स्टडीज में पढ़ाई की है, ऑप्शनल आपका सोशियोलॉजी है। Yes, sir. अरे अच्छा ठीक है। तो ऑप्शनल आपने चेंज क्यों किया अपना, कहते हैं इससे So आपने ऑप्शनल? primarily, I can state two reasons for it. So firstly, while studying agriculture, I knew the technical know-hows of crop production. So, but later on, I understood that the farmers are not adopting the technologies which are there in the research labs. So until and unless I do not understand the society of Bihar and what are the cultural issues they are facing, I think so there will be implementational challenges. So I thought of taking sociology. And so second reason was obvious that so it was really difficult to find the agriculture materials for the BPSC mains preparation. So ओके, मतलब सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो बात कह रही है वो आपकी कुछ समझ में आ रही है। पहली बात है मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर में कहीं काम तो किया नहीं कि आपको पता चले, सब थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, तो आपको कैसे पता चला? आपने वर्किंग I कहीं would काम भी किया है काम भी किया है इससे पहले आपने कहीं? yes sir. I have worked यस। in GVK also as a block project manager. And so while we were in college, we were having two programs. That was RAVE, Rural Agriculture Workshop, and sir also experiential learning program. So we used to go to the village and we used to stay there for 1 month. It was a type of camp, sir. ओके ओके ओके, ठीक है। वो बिहार के जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स हैं और इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स है, इसमें कुछ डिफरेंस है कि सेम है? Sir, more or less the problems are same, but sir, a basic problem with the prosperous states, agricultural states, which are prosperous in Bihar is that sir, there are lack of marketing facilities. So farmers have to face more price volatility when compared to the farmers of Punjab and Haryana. ओके ओके। अब कुछ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस के मेरे को नाम बताइए जो इस समय एग्जिस्ट करती हैं। Yes, sir. So there is MKSS, Maha Kisan Sangathan, and so then there is Bharatiya Kisan Union. Sir, I'm able to recall just two now. There are some political affiliation with these organization, or they are working independently? So they are working independently only. Okay. If you see the farmers of Bihar and farmers of Tamil Nadu, you can find any similarity or differences between them? Yes, sir. The farmers of Bihar and farmers of Tamil Nadu are similar when it comes to the crop production. Like in Tamil Nadu also they are taking rice as their main crop, and sir in Bihar also we see that how paddy is grown extensively in the state. So, but one basic thing is that they are having more inputs due to state facilitation, which the farmers are not having in Bihar. Okay. So, अभी कहते हैं रिसेंटली जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है उनका वो एक्सपायर हो गए, ठीक है? तो उन्होंने क्या एमएसपी को वो जो उनका जो कैलकुलेशन था वो जो चाहते थे फार्मर्स के लिए, उसको आप समझा सकते हैं? Yes, sir, sure. Sir, M.S. Swaminathan, also known as the father of Indian Green Revolution, he gave an MSP formula in his report.
So according to him, he gave a formula which was called as C2 plus 50%. So here, sir, the C2 cost is the cost of rentals also that the farmers are accruing on crop production. And sir, he said that the government should also provide 50% return plus C2 cost. But sir, presently the farmers are getting only A2 plus FL. That is the cost of inputs and the family labor which is incurred on the land. ओके आप क्या नाम है, आपने एमबीए किए हैं, वो भी आपने एग्रीकल्चर स्टडीज में ही की हुई है, तो आप ये मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर में डिफरेंस क्या होता है? Yes, sir. Manager basically is concerned with managing the entire situation or any action. And sir, administrator has also got roles in making rules and then administering. There is some difference between public administration and private administration. Yes, sir. So, public administration is concerned with making public policies. It is concerned with in public domain. And sir, private administration is generally what we see in the form of private sector organizations and MNCs. What are the basic motives behind these public and private sectors? What on what principles they work? If I say that the public sector is working on which principle and the private sector is working on which principle, can we differentiate that on that principle? Sir, I can just try because I think there are no watertight differentiations. But public sectors works more for the societal problems, and so private sector is more profit oriented. Yes. Okay. तो आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ऑप्ट किया, ठीक है? Yes, sir. ओके ओके, तो सोशियोलॉजी में और एग्रीकल्चर में कुछ सिमिलरिटी है? Yes, sir. In sociology, we. Yes, sir. Sir, if I could explain it with the help of an example, if you could allow me. Yes, you can. So, we are seeing that there are rise in farmer suicide. So basically, sir, it is considered that farmers are not getting inputs and they are into this vicious wire of indebtedness. That is why they are committing suicide. But then we can relate it to a very beautiful concept of Durkheim, where he said that why farmers commit suicide. It is a more sociological phenomena. So that was a beautiful thing which I learned in studying both the subjects. Okay. While Durkheim was studying this study of suicide, he applied some methods through which he has studied. So you can tell me what's the method he has applied to while studying the study of suicide? Yes, sir. So, sir, Durkheim was basically a positivist. He relied on using scientific methods, theories, experimentation. And in the study of suicide, sir, he has used multivariate analysis of different variables that he could get from the police station. Sir. Okay. If a farmer is committing a suicide, so whatever the four different category that Durkheim has done, in which category would you like to place that suicide, a farmer suicide? Yes, sir. In my opinion, farmer suicide can be classified in all the four categories or all the four suicidogenic forces that Durkheim stated. So, should I explain? Yes, you can. Go proceed. Yes, sir. So first is the forces of integration. So Durkheim gave basically two types of suicide. First is altruistic suicide and second egoistic. So farmer suicide can be altruistic also. No. I just want to know if you have to characterize only in a single suicide, so which will be the most preferred one from your side? So I would categorize in a fatalistic suicide. Okay. Fine. कुछ इंडियन विलेज की स्टडीज बताइए आप, फील्ड जो स्टडीज की गई इंडियन विलेज पे. Yes, sir. So the few village studies that I could recall is the study of M.N. Srinivas in the Rampura villages, that is the remembered villages. And so second is the study of S.C. Dubey about Indian villages. And so third is
Andre Bete study in Tanjore district, sir. हाँ, तो SC Dubey, in which village he has studies? You name the village, if you can remember. Yes, sir. If I could guess, it is Shamir Pet, sir. Shamir Pet हाँ, village. yes, fine. Okay, okay. So you were working also. You have worked also for some period after your completion of MBA. Yes, as a block project officer, Jivika Mission is mentioned. Okay, what this Jivika Mission is all about? If you, I would have say that you have to explain the Jivika Mission in just 1 or 2 lines. What would you say? Yes, sir. So the Jivika mission is was constituted in 2007, and it is working closely with World Bank, sir, for two primary reasons. For the first is poverty elevation, and second is women empowerment. Okay, okay, okay. So how these functions कहते हैं? Who are basically associated with this Jivika Mission? So as a part of this project, we are forming self-help groups, and in Okay, self-help groups, yes, and in self-help groups, meetings are organized where it was constituted for the financial inclusion of women, but we are looking at other developmental parameters also, like health, education, and food security of a women. okay, okay, okay. So have they brought any changes? Yes, sir. I believe that even while I was working, there was remarkable change in the uh, personality per se, what we call as empowerment of women. There is reduction of domestic violence also. And so while I was interacting with the women who are involved in Jivika mission, they always used to say that जीविका ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सिर्फ सम्मान ही नहीं, उसने हमें, परियोजना ने हमें साइन तक करना सिखाया है. तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी. ओके, ओके. मैं आपको एक चीज बताता हूँ. संवाद जरूरी है कि विवाद जरूरी है? इस पे आप अपने कुछ विचार विमर्श कीजिएगा और हिंदी में ही बताइएगा कि संवाद जरूरी है कि विवाद जरूरी है. हिंदी में बताइए आप इससे. सर, जी सर. सर, विवाद कभी इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि संवाद ही ना हो सके. हाँ, थोड़ा विस्तृत रूप से इसे बताने का प्रयास करें, जैसे अन्य पहलुओं को आप सर, समझा रही हैं विस्तृत रूप से. यस सर. सर, विवाद, अब हम सभी लोग समाज में रहते हैं तो विवाद तो होगा ही, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम बातचीत करके सर संवाद स्थापित कर सके और किसी भी समस्या का समाधान निकाल सके. ओके, ओके. मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप इस पे आप अपने व्यूज दीजिए मुझे. हाँ, जैसे आप मान लीजिए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपका चयन हो जाता है, एज अ डिप्टी कलेक्टर पोस्ट हो जाते हैं. और आपके आपको क्या कहीं पे एक कम्युनल टेंशन वहाँ जनरेट हो रही है दो ग्रुप्स के बीच में, ठीक है. आपको ऊपर से ऑर्डर आता है कि आपको वहाँ जाना है, उस चीज़ को कहते हैं आपको बैलेंस करना है, मैनेज करना है. अगर नहीं मैनेज करेंगे तो वो इशू एक्सकलेट कर सकता है. तो एज एन ऑफिसर आपको पहुंचना है, ऊपर से आपको को आपको दिया गया है चॉइस कि किस तरह से आप करेंगे. तो क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप अपनाएंगे इस केस में? सर, किसी भी कम्युनल एक्शन का जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होगा वो मैं पालन करूंगी. सर, सबसे पहले तो मैं सुरक्षा दलों को वहां पर, पुलिस कर्मियों को वहां पर भेजूंगी ताकि जो भी विवाद है वो उस समय तक स्थगित हो पाए और वो ज्यादा ना बढ़े. सर, दूसरी चीज मैं कोशिश करूंगी कि जानकारी प्राप्त कर सकूं सभी लोगों से कि आखिर विवाद का कारण क्या था. सर, उसके बाद मैं जिन दो समूहों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ होगा, मैं उन लोगों से पहले तो अलग से बात करने की कोशिश करूंगी और उन लोगों को सुनकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करूंगी. सर, उसके बाद मैं दोनों को आसपास बैठाकर नेगोशिएट करने की कोशिश करूंगी कि सर, किसी भी समाज में हम लोग, भारत में इतनी डाइवर्सिटी है तो कैसे हम लोग साथ रह सकते हैं. और सर, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे गलत इंफॉर्मेशन जाती है, तो मैं एक नोट जारी करूंगी जिससे कि सोशल मीडिया में किसी भी तरह के समाज के जो कुछ वर्ग है वो गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचाए. ओके. तो इससे लग रहा है आपको सुधर जाए, मतलब कि रुक जाएगा इशू, ये सॉल्व हो जाएगा?
सर अगर मैं समस्या के जड़ तक जाऊंगी और उन लोगों को एक समाधान दूंगी, सर विवाद हुआ है तो कोई ना कोई कारण वश ही हुआ होगा, तो मैं कोशिश करूंगी उसके जड़ तक जाऊं, और अगर मुझे कोई मदद चाहिए होगा तो मैं अपने सीनियर अथॉरिटीज की भी मदद और उनकी भी राय लूंगी सर। ओके प्रीति मैम। थैंक यू सर। Okay, Ankita. So just tell me गुड इवनिंग मैम। कि मतलब what is the one thing which you are proud of, you know, or your biggest achievement till date, till date. Ma'am, one thing that I'm proud of is of my strong conviction towards anything, and also that many times I have made my parents proud. So I Okay. find this nice. So can you just share one or two, like you just mentioned many times. So can you just share one or two incidents where you made your parents proud? Yes, ma'am. My achievements may appear small, but it meant a lot for my parents that I scored a good percentage even during 10th and 12th. And also, ma'am, where I was able to bag a USOS scholarship in the Okay. Antwerp University. So that was just two students who were selected from India. So why you didn't went for that scholarship? Ma'am, unfortunately, I got selected during the COVID time and the entire course got cancelled, although they compensated us online. Okay, okay, okay. So Ankita, now just tell me ki, you know, why there are no Indian universities among the, you know, top 10 universities of the world? Why can't we see any Indian universities among the top 10 universities? Ma'am, ma'am, I can state two fundamental reasons for it. Ma'am, first is the lack of research and development in the institutions. As we know, the ranking are categorized on how many journals and theses the students and the research scholars are writing. So, ma'am, this one thing, and ma'am, second is lack of funds also in the institution. Lack of funds. Okay. And what about the basic education system in the country? Basic education system in the country? Yes, ma'am. So the good part is that we have ensured the participation of students. Like the gross enrollment ratio of the country has risen, but we still need to work on providing them quality education, ma'am. Okay. So Ankita, like, you know, Justice Karju says that we should not judge a person from his past, right? So suppose if a criminal is released from the jail yesterday, and today he is contesting an election for ward election. So will you vote for him? Ma'am, that completely depends, like on what grounds he was arrested. So I need to first understand that. And second, ma'am, what are the issues what are the manifesto that he's giving that he's wanting to work and other things, ma'am. If he So has do you, committed any humanitarian, yes, ma'am. then continue. Ma'am, if he has committed any humanitarian crime in the past, I would not vote for him in the short term. Maybe in long term, ma'am, if he works good in the constituency, I can definitely vote for him. Okay, so you don't believe na, that we should not judge a person from his past, right? Or we should? Ma'am, there cannot be a watertight answer to it, I believe. It totally depends, ma'am. Chalo, okay. So now just tell me, just tell me 3 consecutive days, okay, without using any day from Monday to Sunday. You're not supposed to use Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, these consecutive days, but then you are supposed to answer me 3 consecutive days. Ma'am, can I take 30 seconds to Yeah, think sure, over it? you can. Ma'am, can we not say Monday, Tuesday, and Wednesday? Like, No, you are not supposed could to you use please any of the pardon? day. You are not supposed to use any of the day from Monday till Sunday. You are not supposed to use these days, but still you have to tell me 3 consecutive days. Sorry, ma'am, it's not clicking like.
I'm not getting, ma'am. Sorry. Okay, it's just that I am asking about 3 consecutive days, okay? And I'm just saying that you are not supposed to use any day between from Monday to Sunday, right? So you're not supposed to use Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday, Friday, Saturday like this. So apart from this, 3 consecutive days can be yesterday, today, and tomorrow. You got it? Yes, ma'am. Okay. That was Okay. Now, nice. Ankita, just tell me, cooking is your hobby, right? Yes, ma'am. So suppose I'm visiting your place. I'm visiting your house. So what will you cook for me? Ma'am, when you visit my house, first I'll ask you what you would like to have, and accordingly, based on your preferences and choice, I will go for And cooking. I'll say, Ankita, you can make anything. Ma'am, still I'll ask at least the vegetarian and the non-vegetarian thing, and then I'll Okay. go forward. Okay, Ankita. So, okay, that was nice. So that was a nice session. So let's just go for reviews. Okay. And sir, are you there? Ma'am, thank you, ma'am. हाँ यस So, हाँ sir, अंकिता we shall लास्ट में proceed towards the reviews. हाँ yes yes we last there is a question afterwards in present scenario you can see caste and class so which is most prominent these days, caste or class? Sir, in some arena, we see that caste has sublimed to class in urban areas. Sir. Like in MNCs, when we are working, we are sitting on the same table and not asking about someone's caste. But the table and the people we are dining with definitely depends on the class. But sir, there are other sides of like caste-based occupation is still relevant in India, like in manual scavenging we find. ओके ओके चलिए ठीक है आपके Thank you, रिव्यूज पे sir. आते हैं। तो आपने ठीक दिया अपना जो भी था आपका ठीक था कुछ कुछ जहाँ आप गड़बड़ रहे हैं जहाँ आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को आपने ठीक से नहीं बताया पब्लिक प्राइवेट जो था वो आपका थोड़ा सा सही नहीं आ गया और जहाँ दरकिम का जो स्टडी था वो किस मेथड से यूज होती है वो थोड़ा आपसे नहीं सही गया। बाकी तो आपने ठीक कहा बोलते अच्छा है आपकी बार पिछली बार जो हमने सेशन लिया तो उससे काफ़ी आपका इम्प्रूवमेंट हो गया है। आप मुस्कुरा रहे हैं अच्छे कपड़े पहने हुए हैं बिल्कुल मैच कर रहे हैं। हाँ स्माइल है कभी आप रुकते भी हैं आप आप ही तो जब हंस आपसे रहते ज्यादा। हाँ तो वो हो जाता है मैं देख रहा था कि मतलब आप स्टूडेंट हो आपके अपने तो मैं देख रहा था कि आप बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हो। तो वो सब चीज़ें आपके अंदर जो पहले नहीं थी वो इस चीज़ में इस सेशन में बिल्कुल वो दिख रही है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हो। तो उसमें कोई इशू नहीं है आप हम्बल लिख रहे हो स्माइल But है आपके चेहरे पे। हाँ Ankita, this is Bihar Public Service Commission, तो don't इतना ज्यादा आप इंग्लिश मत बोलो, मिक्स मैच करो, पे इंग्लिश भी बोलो, लेकिन मतलब don't give पूरा इंटरव्यू इन इंग्लिश, राइट? सो मिक्स एंड मैच करके बोलो, आई थिंक दैट विल बी बेटर। व्हाट डू यू से सर? मतलब क्योंकि इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हाँ शी वाज सेइंग आप आज हाँ आपने वो जो विवाद वाला वो बोला, वो जो सर ने पूछा था, हाँ यू वाज हाँ सेइंग वेरी फ्लुएंट हिंदी, गुड वर्ड्स एवरीथिंग। हाँ हाँ, सो ट्राई टू यूज हम्म बोथ द लैंग्वेज। अब क्योंकि मैम, इन चक्कर ये ना विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई वुड स्पीक हिंदी, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, इट्स नॉट जस्ट दैट, मतलब आप बोलो इंग्लिश बोलो, बट यू नो वी डोंट नो ना कि वहां बिहार का पैनल किस तरह से है, कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। इफ मतलब कभी कभी कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा इसको ऑफेंसिव भी ले लेते हैं, अच्छा ये सारा इंग्लिश में ही इंटरव्यू देगी, मतलब मतलब यू मैम, नेवर नो कि व्हाट दे आर यस मैम। थिंकिंग एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड ना। सो यू नीड टू मेक श्योर उनको ये बताना कि आई एम वेरी वेल अवेयर विद द इंग्लिश एंड एज वेल एज आई एम वेरी वेल अवेयर हाँ, विद हिंदी। तो उनको ये यस चीज पता होना चाहिए कि जो हमारे सामने कैंडिडेट बैठा है, ऐसा नहीं है कि ये अंग्रेजी बाबू ही है, क्योंकि बिहार में यू हैव टू वर्क फील्ड में, आपको काम करना है, और किस तरह से वहां का लिटरेसी रेट है, मैम। जैसे आप जनता से डील करोगे, तो यू नीड टू बी ऑन द ग्राउंड। तो आप दोनों बोलो, उनको अपने दोनों ट्रेड्स दिखाओ दैट यू आर एक्सपर्ट इन बोथ द लैंग्वेजेस। ओके। ओके मैम, देखिए श्योर, यस मैम। जब आप अपनी जैसे नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं तो उस समय आप हिंदी का प्रयोग करें और जब आपको अपने एकेडमिक्स की चीज़ें बतानी हो समझानी हो जिसमें आप फ्लुएंट हैं तो आप अपनी इंग्लिश की बात करें। जैसे मैंने आपसे जो दोनों सेशन में क्या किया मैंने आपसे हिंदी बुलवा ली या मैं देख लिया चेक कर लिया कि आपको हिंदी बोलनी आती है कि नहीं आती है। ठीक है तो मैंने आप मेरे स्टूडेंट हो मैंने सिलेबस करवा लिया। वो पता नहीं करवाएं कि नहीं है वो प्री कंसीव नोशंस ले लें अपने
तो इस वजह से आप बीच में हिंदी बोल लीजिए, थोड़ा सा अपने आप से आप कोशिश कीजिए जैसे आप Sorry. जाएंगे तो हाँ प्रणाम सर ही कहेंगे उनसे, और सर मैं इस चीज को बता सकती हूँ, आप कुछ कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग बीच बीच में आप कर दीजिए जिससे उनको इस बात का ज्ञात हो जाए कि ये जो हमारे सामने कैंडिडेट है वो हिंदी भाषा में भी उतना समान रूप से परिपक्व है जैसा कि वो अंग्रेजी भाषा में है। तो क्योंकि अब मैं भी कहता हूँ वो 10 से 12 मिनट चल रहा है, वो आपको मौका ही ना दे अपनी इस चीज को दिखाने का, तो हम तो पूछ ले रहे हैं आपसे कि आप बता दें, लेकिन वहां हो सके इस चीज का मौका ही ना मिले। तो इस चीज को आप थोड़ा सा वो कर लीजिए, बाकी तो आप बाकी सब चीजें आपकी सही हैं, आप क्वेश्चंस आप सही बता रहे हैं, कोई उसमें इश्यूज नहीं है, आप काफी काम है, कंपोज्ड हैं, Your हम्बल body हैं। language is good, ना? Body बॉडी language is लैंग्वेज, good. हाँ 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 बहुत अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज इसकी अच्छी है। और Sorry. तो मतलब कि हाँ आपको मतलब देख के नंबर देने का मन करता है कि नंबर दिया जाए, तो मतलब आप अपने नंबर खुद कटवाएंगी जो भी करेंगी गलत, तो इस पोजीशन में आप हैं। तो ठीक है, आप अच्छा बात कर रहे हैं, जो भी आप कंप्रेशन कर। Thank you, sir. Your voice is not coming. You are on mute. अंकिता, अच्छा नहीं मेरा कॉल आ रहा था कुछ, अंकिता कुछ Ma'am, पूछना तो am नहीं I है आपको? audible? Yeah, हाँ yeah, यस, you are नहीं audible. सर, वही लैंग्वेज का ही था, तो मैम बताइए कि बीच बीच में हिंदी भी बोल रहा है, तो वो चीज हाँ हाँ दिमाग में थोड़ा। हाँ वो थोड़ा सा वो करना है, क्योंकि आप थोड़ा सा जैसे कि हिंदी के कुछ वर्ड्स को, क्योंकि हम बुलवा लिया आपने, वो शायद 12 मिनट में आपसे नहीं बुलवाए, तो उन्हें लगा, कहते हैं इट्स सम स्टूडेंट इज नॉट मेट फॉर बीपीएससी और सम अदर Right, शी इज right, मेट फॉर right. सम अदर प्लेसेस, सो दे वुड बी गिविंग यू एन एवरेज। अगर आप जैसे राहुल है, अभी हमारे पास से गया है, तो उसकी भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में ठीक ठाक है, तो वो हिंदी बोल रहा है, तो हमने उससे बुलवाई भी है, तो आज बहुत ज्यादा इंग्लिश हिंदी बोला उसने, लेकिन हमने कहा कि ऐसा भी मत करो कि हिंदी हिंदी हो जाए, क्योंकि जो जो चीज आपकी स्ट्रांग है, जिस पे आपको होल्ड है, हाँ एटलीस्ट आप उसको अपने साथ लेके चलोगे। तो प्राइमरी आपका इंग्लिश है, आप इंग्लिश के साथ ही जाओगे, लेकिन बीच बीच में आप जैसे वो कि सर मैं इस चीज को मैं सर बता सकती हूँ, सर मैं सॉरी सर मैं इस चीज में मेरे को, तो आप कम से कम सर मैं इस Unmute yourself, sir. हाँ ठीक है, मैं थोड़ा I think there is some network problem from his side. glitch. But overall, Ankita, you are doing good. Yeah, you are performing well. You have that confidence, and your body language is good. The way you are presenting yourself is also very impressive. And you just need to take care of the small its and bits Thank little you. things, right? And you'll do very well, yeah. आपसे तो हमें top rank की उम्मीद है. Your best wishes will work, ma'am. Definitely, definitely. So anything else? No, ma'am. You're good to go? हाँ Okay. नहीं Yes, ma'am. नहीं Thank you so much. नहीं, अंकिता अंकिता भी देर वो शायद कोई आ रहा है, तो वो शायद कुछ बताना चाहता है इनको, तो मैं कहा ज्वाइन कर बता But we सकते हैं आप। don't have much time. We only have 5 minutes left हाँ to तो बस वो for 5 the मिनट्स end में of ही the बता। session. Who is joining हाँ with तो us? जफर आ रहा है। Okay, Safar. Okay. हम्म। So ask him fast ना. So otherwise ये अपने आप फिर disconnect हो जाता है. हाँ ही कॉल्ड मी, अब उस गाड़ी में है, देखो चला रहा, अभी आता ही है। Okay, we have 6 minutes. यार मुझे आपका इंटरव्यू कब है अंकिता? 18th को? Ma'am, 17th है. 17th को. Okay, and you have reached Patna, right? You have reached Patna. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, that's I good. have just got sufficient amount of flu, suffering from cough and fever, but I have taken medicines. I'll recover. Kindly take care of yourself because you know ये मौसम change हो रहा है ना, तो everyone is suffering from this viral thing. और flu is very common. Yes, ma'am. Cough and cold. So you need to take care of yourself ताकि on the day of your interview आपकी आवाज जो इतनी अच्छी है वो अच्छे से निकले यार बाहर, तो उसका ध्यान रखो अपना. नहीं नहीं बीमार ठीक है Yes, ये ma'am. देखो, अच्छा बोल रही है बीमार में तो। ओ हाँ वो प्रीत उसको लिंक फिर से भेज दो, लगता है कुछ इश्यू हो रहा है उसका, क्या वो तीन Issue चार क्या? लिंक एक It's तीन चार only लिंक एक there is no time. There is only 4 minutes. But ठीक है, हाँ I'll तो दे just दो share him the link. हाँ हाँ दे दो।
नई लिंक दे दो उसको, चाहो तो फिर ऑफ कर दो इसके रिकॉर्डिंग, नहीं ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो मैं ऑफ कर देती हूँ, बट देन